2 minutes to go now. ભાભી કેમ છો? બસ મજામાં બેન. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થયું છે. જય જિનેન્દ્ર. So just 1 minute to go and we'll start the session. So let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all. Vikas Bihani ji, can you please help me muting everyone who is joining? Yeah, sure. Thank you. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I Can everyone hear me? I request everyone to please keep your microphone on a mute mode till the session ends. Thank you very much. I think let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Leena Doshi welcome you all on the 92nd program from the platform of Let's Grow Together. हमारी लाइफलाइन समान 108 सर्विस से शायद ही कोई अनजाना होगा, पर ज्यादातर लोगों का सिर्फ यही पता है कि इमरजेंसी आने पर 108 को फोन करो और वो आ जाती है। पर क्या हम ये जानते हैं कि 108 डायल करने पर क्या होता है, उसे कैसे बुलाया जाता है, उस सर्विस के अंदर में और क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध है, ये कैसे संचालित होता है, उसके जैसी और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। तो चलिए आज जानेंगे पूरा 108 मेडिकल इमरजेंसी सर्विस के बारे में। पर हमें कई बार मन में ये सवाल भी आया होगा कि इसका नाम या नंबर 108 ही क्यों रखा गया। जब भी हम धर्म की चर्चा करते हैं तो 108 अंक का जिक्र जरूर होता है। इस अंक को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंत्रों का 108 बार जाप करना, इसके लिए 108 मोतियों की माला का उपयोग करना, 108 बार मंदिर की परिक्रमा करना आदि, इसे शिव का अंक भी माना गया है। यही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति के मन में कुल 108 प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। शास्त्रों के अनुसार
108 का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। कहते हैं 24 घंटों में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। 24 घंटों में से 12 घंटे तो दिनचर्या में निकल जाते हैं, तो बाकी के 12 घंटों में जो 10,800 सांसें बचती हैं, जिनका इस्तेमाल अपने इष्ट देव का ध्यान करने में लगाना चाहिए। लेकिन इतना समय निकालना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए अंतिम संख्या के 2 शून्य हटाकर 108 सांसों में ही प्रभु को याद करने की मान्यता प्रदान की गई है। वैज्ञानिक तथ्य के बारे में बात करें तो 108 का संबंध सूर्य की कलाओं से माना गया है। एक वर्ष में सूर्य की 21,600 कलाएं बदलती हैं। 6 माह उत्तरायण, 6 माह दक्षिणायन होता है। इस तरह 6 माह में सूर्य की कलाएं 10,800 बार बदलती हैं। उसमें से अंत के 2 शून्य निकालो तो 108 बचते हैं। 108 मन को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना गया है। ये 108 की धर्म और विज्ञान से जुड़ी जानकारी थी। अब अपनी 108 सेवाओं की पूरी जानकारी पाने हेतु हमारे बीच मिस्टर जसवंत प्रजापति जी मौजूद हैं। मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। Mr. Jashvant Prajapati is the Chief Operating Officer, GVK EMRI Gujarat, a graduate engineer from SS Engineering College and postgraduate in management from ICFAI University. Mr. Prajapati is an aspirational leader with strong background of technical field and management skill. Mr. Prajapati have been associated with GVK EMRI since 2007 and one of the pioneer of 108 EMS, that is Emergency Medical Service in Gujarat. At GVK EMRI, Mr. Prajapati leads a team of 7,000 employees, including 150 plus supervisory cadre, that is middle to senior leader across 10 plus projects awarded by Government of Gujarat to GVK EMRI under the PPP model, that is public-private partnership model. 108 service have been blessings to people with a strong pillar of operation, technology, analytics, quality, and other support department led by Mr. Prajapati. Innovation of 108 EMS is a continuous process, and as a result, EMRI Gujarat is the first state to launch new generation application with automatic identify the nearest and appropriate ambulance in emergency with minimum human intervention. Under the leadership of Mr. Prajapati and strong team of EMRI, there are various other projects which has flourished during 14 years of journey of 108 EMS. Some of the key other projects are 181 Abhayam, that is Women Helpline, 1962 Karuna Animal Ambulance Services for stray animals, mobile veterinary dispensary for pet animals and farmers, 104 Health Helpline, 1100, that is telemedicine for telemedicine, and Khilkhilat drop back and pickup service for pregnant mothers and mobile health unit for labor and remote villages. So dear friends and family, join hands in welcoming a towering personality, Mr. Jashvant Prajapati ji. जशवंत जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. और चलिए आपके साथ कुछ सवालात करते हैं 108 सर्विस के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे आपसे। मेरा पहला सवाल है सर आपसे, 108 इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस क्या है और कब शुरू हुई? First of all, I feel very happy and privileged by joining this wonderful platform of Growing Together led by you and all the esteemed participants and viewers. We welcome you to this talk show. And before start of this program, you already have told so many things about 108 number, its scientific, social, and spiritual context with human life.
So let me explain simply. This 108 number is a toll-free 3-digit number meant for medical, police, and fire emergencies across the state of Gujarat. And this is a number available 24/7, rural, tribal, desert area, coastal area, urban area, everywhere, without using any prefix or suffix from mobile or landline number. One can access this emergency help without incurring any cost by dialing simply 108, and one can help somebody in distress by using this number for a person injured or a pregnant woman or any kind of medical emergency. This service actually was started in 2007, and Gujarat was at that time led by our present Prime Minister, Shri Narendra Modi Sahib. He was Chief Minister at that time. So this 108 number basically was allotted by DOT for creating an access for people in distress. So we, as a private partner to this initiative, it is a public-private partnership. So Government of Gujarat and GVK EMRI, these are the two partnering agencies where this services at present we are providing apart from Gujarat to various states and union territories. So we have a small presentation. So appropriately, as per your moderation, we will try to give the presentation to the audience, and whatever the question, answers, and insights of technology, protocols, training parts, these are the critical component of care, and a lot of role to be played by the hospitals for saving human life in golden hour and platinum minutes. So one by one, we will go through each elements of this program. So my colleague, Mr. Vikas Bihani, who is assisting me in all the projects, he is handling analytics for all the data analysis and creating insights and forecasting for various occasions. So thank you, Vikas, for sharing this PPT. So this is all about 108. We can see this ambulance having a very distinct branding across the state. This organization, GVK EMRI, we have a visionary leadership of Dr. APJ Kalam. Till he was live, we were blessed with his leadership, and his vision was not only to bring in best technology for saving lives, but to take these services in all the SAARC countries. So as a part of that, we are serving Sri Lanka, and that entire project is funded by Government of India. And you can see Dr. GVK Reddy, who is the promoter and chairman of GVK Group. And this GVK EMRI is a not-for-profit CSR wing of GVK Group. If we talk about the spread of services by GVK EMRI, so we are providing in 15 states and union territories these services, where Andhra Pradesh or Hyderabad was our headquarters, and Gujarat was the first state to adopt this unique model in PPP for entire state of Gujarat with 400 ambulances at that time. This background and history of this was just to save human lives, and by bureaucratic and political will, this program has been very, very successful in all the states, especially Gujarat. It is highly advanced and strong part of human life as of now, and we will see that in details in the coming slides. We have a small video. This is the video of 2007 when the services were launched by our present Prime Minister and the then Chief Minister of Gujarat. His vision was very, very clear about these services, the scales,
the effectiveness, even the integration of various parts and collaboration of various agencies for creating safer society. No volume, please. There's no volume, sir. Yeah, 1 minute. मुझे विश्वास है कि 108 मुझे विश्वास है कि 108 के अंदर की सेवा प्रारंभ में अहमदाबाद गांधीनगर के इलाके को सर्विस मिलेगी, कुछ नेशनल हाईवे के कुछ क्षेत्र तक पहुंचेंगे। मेरा आग्रह है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन की सेवा बढ़ सके, 50 हम कैसे ले जाए। 2010 गुजरात की स्वर्ण जयंती, 2010 गुजरात की स्वर्ण जयंती। उस 2010 की गुजरात की स्वर्ण जयंती के पहले गोल्डन जुबली के लिए जब गोल्डन गोल तय करते हैं तो हमारा ये भी गोल्डन गोल होगा कि फर्स्ट गोल्डन आवर जो किसी भी जिंदगी बचा सकता है, उस फर्स्ट गोल्डन आवर की सेवा गोल्डन जुबली के पहले गुजरात के सभी नागरिकों को मुहैया हो, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि 2010 के पहले पूरे राज्य में हम इस नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, व्यक्ति जब आपत्ति न होता तो जो चीजें तत्काल या तो एक परमात्मा का स्मरण कर देता या अपने निकटस्थ स्वजन को इसकी याद आती किसी भी संकट के समय। इस संकट के समय ईश्वर से पहले उसे 108 याद आ जाए। ये जो 108 सर्विसेज का काम हो रहा है, नौजवानों को पुलिस डिपार्टमेंट के हो, फायर ब्रिगेड का हो, हेल्थ सेक्टर का हो, इवन एम्बुलेंस चलाने वाले पायलट में का हो, इन सब के आंध्र में भेज करके ट्रेनिंग करवा। आने वाले दिनों में यहाँ परमानेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुरू करना, यानी पूरा ह्यूमन रिसोर्स फील्ड डेवलपमेंट का नेटवर्क खड़ा करना और सारी व्यवस्था एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करे, उसका पूरा मैकेनिज्म चलना। उन चीजों को लेते हुए हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन व्यवस्था को हम करते हैं और एक बार ऐसी व्यवस्था बन जाती है तो धीरे धीरे हॉस्पिटल में 108 नंबर से दौड़ भागती हुई गाड़ी है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना शुरू कर। हर व्यवस्था में अपग्रेडेशन के देशों में होता है, नहीं हो सकता है। ऐसी लघुता ग्रंथि मेरे दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ हो सकता है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ इसी धरती पर हो सकता है। इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधार करके किया जा सकता है। विकास जी, यस मैम, ये वीडियो में है ना इतना स्पष्ट नहीं आ रहा है, काफी सारा वॉइस क्रैक हो रहा है। ओके, so should I Clarity. play again? I think let us talk because इसमें वॉइस काफी क्रैक होता है तो मैसेज अच्छी तरह से पास नहीं हो रहा। Okay. If it is important तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। उसकी स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं। नहीं, वो तो अपने आप ही प्ले हो रहा होगा शायद। मैं फिर से प्ले करता हूँ, अगर फिर से क्रैक हो रहा है तो आप बताइए। थोड़ा आधे से ही स्टार्ट करें। हाँ जी, Right. जी, हाँ हाँ। मुझे विश्वास है कि 108 के पहले गुजरात के सभी नागरिकों को मुहैया हो, उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि 2010 के पहले पूरे राज्य में हम इस नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, व्यक्ति जब आपत्ति न होता तो दो चीजें तत्काल
का स्मरण कर लेना या अपने निकटस्थ स्वजन को इसकी याद आती किसी भी संकट के समय। मित्रों, मैं वो स्थिति देखना चाहता हूं कि संकट के समय ईश्वर से पहले उसे 108 याद आया। ये जो आज 108 सर्विसेज का प्रारंभ हो रहा है, नौजवानों को पुलिस डिपार्टमेंट के हो, फायर ब्रिगेड के हो, हेल्थ सेक्टर के हो, इवन एम्बुलेंस चलाने वाले पायलट मित्र हो, इन सब के अंदर में भेज करके ट्रेनिंग करवाना। आने वाले दिनों में यहाँ परमानेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुरू करना, यानी पूरा ह्यूमन रिसोर्स फील्ड डेवलपमेंट का नेटवर्क खड़ा करना और सारी व्यवस्था एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, उसका पूरा मैकेनिज्म चैनलाइज करना। उन चीजों को लेते हुए हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इन व्यवस्था को हम करते हैं और एक बार ऐसी व्यवस्था बन जाती है तो धीरे धीरे हॉस्पिटल भी 108 नंबर से दौड़ भागती हुई गाड़ी है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना शुरू कर। हर व्यवस्था में अपग्रेडेशन हो सकता है। मित्रों, दुनिया में सब कुछ पश्चिम के देशों में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। ऐसी लघुता ग्रंथि मेरे भीतर नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ हो सकता है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ इसी धरती पर हो सकता है, इन्हीं नागरिकों के भरोसे हो सकता है, इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधार करके किया जा सकता है। Yeah, thank you, Vikas. So this video was all about the vision before 15 years, where there was a strong human resource skill development program, integration of various agencies, medical, police, and fire, and taking the safety to the next level with global standards. So each word has been now materialized in Gujarat. So we can see the infrastructure, emergency response center, and training institute. So our headquarter in Gujarat is in Naroda, Kathwada, East Ahmedabad, where government of Gujarat has given 15 acres of land, where 5 acres have been constructed for emergency response center, where 24/7 emergency response center is there. And we have second phase as a training and research center. It is equally 5 acres land where we have training center. We train our paramedics, pilots, even government doctors and nurses in that training center. And we have small hostels, boys and girls hostel, because we call all our crews from ambulances twice a year for refresher training program. So training and retraining is basic mantra of EMS, where the latest protocols and practices published by our global knowledge partners, we are imparting as a training for saving life during the golden hour and platinum minutes. The basic functionality of 108 service, it is very interesting. It comprises of 3 major stages: sense, reach, and care. So as soon as we dial 108 number, our 24/7 ERC, that is Emergency Response Center, which tries to sense the scale, the location, the type of emergency, and what kind of rescue is required. So this entire process, we call it sense. We are sensing the emergency through 108 number, and we decide what scale and what type of rescue is to be activated. If it is only medical service, we dispatch our ambulances. If the incident is medico-legal, where police service is also required, we activate medical and police both. And if some big scale disaster or something where fire department is also required, we activate fire department also. So after dispatch of our ambulances, our ambulance reaches the scene where our paramedics, who are already inside the ambulance, one pilot who is driving the ambulance, and one EMT, it is emergency medical technician. They reaches the scene, they examine the victim. If it is a sick patient or it is injured individual,
So they take the assessment of the medical status of the person, and then they interact with our doctors, and they provide pre-hospital care en route to the hospital. So yeah, so sense, reach, and then care. We are providing pre-hospital care, and then we lend them into the hospital for definitive care. So all these three elements are technologically linked with totally a paperless EMS. It is all digital process. We will go into the details how documentation and communication takes place, where the data generated, we use it for research purposes. Then after completing this cycle, we do 48 hours follow-up. So we call back the patient or the relative or the caller to know the status of the patient. Either the patient has been discharged from the hospital, or it has been continuing the definitive care in the hospital, the situation is worsened or improved. And finally, we take the feedback about the quality of our 108 service. Is there any scope for improvement in our service? Are there any suggestions? And what is the feedback of our users? This is the process flow. As soon as we assign the ambulance, our clock starts. So we call it the time cycle. So important element of time cycle of handling one case is, first of all, is our handling time. So the time we consumed in communication or taking the information and assigning the ambulance is called our average handling time of the call center. And all our ambulances are GPS enabled. So we can see all the ambulances live in our control and command center, along with the status of the ambulance. Either that ambulance is free, available for assignment, or it is moving and carrying already a patient inside the ambulance. So within shortest time, we have to identify the nearest free ambulance. And as soon as the ambulance is assigned, we measure the assigned to wheel time. After getting the notification, immediately the wheel of the ambulance should move, and the travel towards the scene of incident should start. After reaching scene, that element we call it is call to scene time, which is the response time. And I am very happy to share all the viewers that average response time of 108 services in Gujarat is less than 19 minutes for the entire state. And in urban or metros, it is less than 10 minutes. And Ahmedabad, it is around 8 minutes. So we reach average within 19 minutes across the state. Either it is a tribal area, or it is a hilly area or desert area of Kutch, or coastal area of Gir Somnath and Dwarika. So after seeing, we assess the patient. Either the patient is lying on the road after road accident, or it is in a farm where snake bite case is there, or a pregnant lady from the residence, or a citizen calling from a multi-storied building. So we identify, we reach the victim, we take the vitals. So this entire time we provide at scene care and load the patient inside the ambulance, and then ambulance goes to the hospital. So scene time and scene to hospital. After hospital reaching, we admit the patient with proper communication of pre-hospital care, and which helps the doctors to decide the definitive care, and it saves the time and creates continuum of care. And after admitting the patient in the hospital, the ambulance is sanitized and comes back to the base, and it waits for the next assignment. This was about the training programs. We train our paramedics for advanced life support, basic life support, advanced trauma life support,
and we have American Heart Association as our knowledge partner and Stanford School of Medicine as our strategic EMS protocol partner. These are the domain experts which are imparting their knowledge to GVK MRI for serving the people of India and people of Gujarat. That is Stanford School of Medicine, Carnegie Mellon, then Shock Trauma Center, Australian Trauma Center, American Heart Association, and NENA of USA. So these are the leading domain experts. We keep on collaborating with them for bringing the best for the people of India. This is the present situation in Gujarat. We have total 802 ambulances. 800 are the road ambulance and 2 are the boat ambulance. And very shortly, Gujarat government is going to start one air ambulance also within couple of days. So Honorable Chief Minister, he has spared his aircraft for people of Gujarat to use as an ambulance for saving lives and long distance transfers in shortest span of time. If we talk about the scale of services, we have catered these services to more than 1 crore 31 lakh people across Gujarat since the inception of these services in Gujarat. We have 1/3 of the beneficiaries are pregnant women. So we basically contribute a lot in reducing IMR and MMR in Gujarat. We have saved more than 12 lakhs lives in a critical situation where 108 has made a difference and a critical person has been saved because of golden hour and platinum minutes intervention by 108. During last 15 years, technological evaluation and induction of new methodologies have been a common practice in Gujarat. Gujarat government and the health department is continuously encouraging us to bring in best technology. So the CAD system is a computer aided dispatch. So we collect the information. There is a telephony interface, CTI, computer telephony interface, GPS, GIS, all integrated application. Gujarat is using NG 108, that is next generation 108 application, where a lot of technical features enable us to serve people within short span and with accuracy and consistency of quality of care in 108 services. This environment is totally paperless, and all ambulances have been given 2 smartphones. One is for paramedic and one is for the pilot. So as soon as the caller is calling 108 number, we get the location, and as per the location, we identify the nearest available ambulance, and the notification goes to the driver of the ambulance, who is called pilot, and paramedic also. He gets the chief complaint, what kind of medical emergency it is. Either it is a cardiac arrest, or it is a road accident trauma, or it is pregnant woman, or it is a snake bite, or it is animal bite, something like food poisoning or medicine overdose. So as per the chief complaint, our paramedics keeps things ready inside the ambulance. We can see the case. This ambulance is like a mobile dispensary. We have 5 types of different stretchers to handle the patient according to the injury. For safety of lifting, moving of patients, we use specific type of equipments. We have 2 types of ambulances. One is ALS and another is BLS. So 1/4 of the fleet out of 800 ambulances in Gujarat, we have
200 advanced life support ambulances, and the rest 600 are the basic life support ambulances. Even the basic life support ambulances also carry a lot of medicines, life-saving drugs, equipments, extrication tools, suction machine, and all type of stretchers inside along with the trained paramedic. So the equipments kept inside the ambulances are continuously reviewed, and it has traveled a journey to take in the best technology and space utilization, maintenance and upkeep of the vehicle and equipment, and its uses for creating meaningful intervention for pre-hospital care of the patient. These are the areas where not only our core operation, we have auxiliary functions like all the industry. We have analytics, supply chain management, human resource management, marketing and communication with community, and training and research, emergency, medical care and learning activities. So these all together, all verticals makes 108 number a strong service, and fleet management is also backbone of our services. Thank you, Leena ma'am. It was a brief about, and we are now waiting for your valued queries and clarification for our better understanding of viewers, and we will be happy to answer your questions. जी जी जी, काफी सारे मेरे सवालों का जवाब तो इसमें आ ही गया है। मुझे लगता है कि जैसे कि आप फीडबैक की बात कर रहे थे, तो किसी ने अगर सर्विस लिया 108 से, तो आपके पास उसका फीडबैक कैसे आता है? जैसे कि टाइम पे ये एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट बीच में हुआ कि नहीं, या स्टाफ का एटीट्यूड सही था कि नहीं, तो ऐसे फीडबैक आप तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए, हम सारे कॉल्स हमारे पास जब इनकमिंग कॉल आते हैं तो वी हैव EPBX which is very advanced, and after just 48 hours it is a meaningful window. We can call after 1 hour also, because the person in distress should not be disturbed, and our motive is to take the clinical status of the patient. Either the patient is alive, or it has been expired, or it has improved, or the situation is either they need more help or some transfer to the higher facility. So these are the clinical aspects, and operational aspects. We take we drill down the communication. Either the ambulance was clean, it reached in time, the paramedics were in uniform, the conduct was good, the service was really free. Is there any suggestion for improvement of the services? So these are the specific questions we ask all our callers, and we generally get excellent feedback about the services. So let me share, 97% of the callers or feedback is, we can say, excellent service. But this 2, 3, 4% of cases, we also go into the detail. Okay, what was short? So sometimes there are issues about the hospital of their choice. If they want to go to X hospital, and our paramedics might have insisted why hospital, as per the protocol, we choose the hospital very scientifically, nearest, appropriate, and then patient's choice. So the hospital which is near, and it should be appropriate. If an injured person wants to go to a cardiac surgeon having no heart problem, we will not take them. So all our paramedics, they follow the instructions of our ERC. So in ERC, we have a huge database of more than 10,000 hospitals across the state. So which hospital, what are the facilities, what are the available resources, and as per that, we guide the patient or its relative, so and so hospital, we will take the patient. But in case of multiple hospitals which are nearby and appropriate also,
Even the patient might be carrying some history, prior checkups and case file. Then we take the patient to the hospital of their choice. So sometimes the issue is about the about the quality of care, because sometimes the window of 5-10 minutes, if the hospital is near, our paramedics will try to put their best. But if in case of some delay of non-action, feedback about pre-hospital care. Yes, got it, sir. Swati Jain ji, please म्यूट करें अपने माइक्रोफोन को. यहाँ से म्यूट करते हैं, आप अनम्यूट कर देते हो. प्लीज कीप इट ऑन म्यूट मोड. हाँ सर, मेरा एक और भी सवाल था. जैसे कोई इमरजेंसी नहीं है, यानी कि नॉन इमरजेंसी में भी क्या 108 को कॉल किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका. आईडी का 108 जो है वो एक इमरजेंसी नंबर है, पर अगर हम बात करें कॉलर्स के बिहेवियर की, तो हम गुजरात में 800 एम्बुलेंस में दिन में करीबन 3,200 के करीब इमरजेंसीज हम हैंडल करते हैं, और इसके लिए 7 से 8,000 कॉल्स हमारे कॉल सेंटर में आते हैं. और ये इमरजेंसी नंबर होने के कारण हमारा एक प्रयास ये रहता है कि किसी भी कॉलर को हम लोग फर्स्ट रिंग में ही रिस्पॉन्ड करें. और आप कभी भी ये अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि कभी भी हाँ जी सर. विकास जी. Yes, ma'am. I just checked. Sir has. सर, हाँ सर का शायद disconnected. लेफ्ट हाँ डिस्कनेक्ट हुआ है. एक दो मिनट वेट करिए, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ है. ही इज जॉइनिंग वेरी शॉर्टली, so please wait just 1 or 2 minutes more. Yeah, am I audible? Yes sir. Yeah, sorry for the interruption. That's fine. Yeah, so जी सर. yeah, we were discussing हाँ, नॉन मेडिकल इमरजेंसी में भी 108 Yeah. को बुलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? So first we were discussing about the caller's behavior. So out of 3,100, 200 emergencies in a day, we get 7,000-8,000 calls in our Katwada call center, and every call we try to answer within the first ring itself. So as per that, we dynamically change the manpower, and even during the day we have a call pattern, and it is very well known to us. So accordingly that we deploy the manpower. But if we talk about Gujarat, globally any toll-free number is having a lot of ineffective calls. So if you talk about 911 of USA or 112 of UK, there are a lot of ineffective calls. And if we talk about Gujarat, gradually the ineffective calls have dropped a lot. When we started, 80-90% of the calls were ineffective. As of now, we have just 30% ineffective calls. Rest are all effective calls. And that credit goes to the people of Gujarat. And we also, by various platforms, and here also we would like to reiterate, in case of emergency, definitely dial 108 number. But if there is genuine emergency, then only dial 108, because somebody in real distress may miss the call, or we may miss the opportunity to save that life. So if there is no emergency, I mean non-emergency, we should not dial 108, right sir? Exactly. Okay, sir. मेरा दूसरा सवाल था कि do you provide transport facility
फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू द अदर हॉस्पिटल, जैसे कि किसी को 108 आया, नजदीक के प्राइमरी हॉस्पिटल में लेके गया, फिर कोई बड़ी इमरजेंसी में लेके जाने का, बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने का जरूरत हुई, तो तब भी वो 108 हेल्प करता है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इसमें डेफिनेटली ये हेल्प करता है, पर इसमें थोड़ा समझने का आवश्यकता है कि our 108 services is meant for scene to hospital or home to hospital, and as we discussed, it is nearest appropriate and patient's choice. But after admission to one primary facility, if the patient requires shifting to secondary or tertiary care center, particularly that hospital is having ambulances with them, and they should use those ambulances for transferring the patient from one facility to another facility, and we call it IFT, interfacility transfer. But ultimately, when the resources are not there or staff is not available, 108 number is also transferring those patients from one hospital to another by verification of the criticality of the patient and communication from the dialing hospital to our ERC physician who are sitting 24/7 in our call center. So those doctors will assess the patient situation and the administrative situation also. Ambulance is not available. What is the distance traveled? Because generally interfacility transfers are long distance transfers where the time consumed is longer than normal calls. So during that time, there should not be a vacuum, or in case of emergency, we should not be left with no ambulance in place. So for this reason, we have a protocol of interfacility transfer for the ultimate goal of saving patients' life. We transfer patients from primary to secondary and secondary to tertiary care centers also. सर, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि पेशेंट को अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए तो तब उसको घर छोड़ने की फैसिलिटी इसमें मिलती है कि नहीं मिलती 108 में? अगेन ये हॉस्पिटल का परव्यू है। हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस है उसमें ये पेशेंट को घर पे छोड़ सकते हैं, पर गुजरात में जैसे घर जाने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर डिलीवरी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, न्यूबॉर्न और मदर को घर पे ड्रॉप करने का एक अलग से सर्विस है विच इज खिलखिलाट। तो खिलखिलाट सेवा में 468 जितनी एम्बुलेंसेस गुजरात में एक्टिवली काम करती है। इट इज ए प्रोग्राम अंडर GSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो this Khilkhilat ambulance is purely meant for drop back. So we are dropping the newborn and the mother from government hospital to their respective homes. And I would link to your earlier question of non-emergency help. So for that also, government of Gujarat has come out with 104 number, and we are operating that number for providing non-emergency medical advice, and which was very popular during COVID Corona period. So it was COVID helpline also, 104 number. 104 ओके सर। हमारे एक पास्ट स्पीकर रह चुके हैं जिन्होंने अगरिया की लाइफ पे, सॉल्ट फार्मर की लाइफ पे पूरा सेशन लिया था, पंक्ति जोग जी। उनके दो सवाल है, अगर पेशेंट रास्ते में गुजर जाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? क्या 108 स्टाफ को लीगल इम्पैक्ट होता है? Patient relatives may feel that emergency service was not provided properly. Who decides which hospital to go? Staff looking at critical situation or relatives decide where they want to go? शायद दूसरा क्वेश्चन का जवाब तो आपने दे दिया था, पर फिर भी ये दो सवाल हैं उनके। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जनरली इमरजेंसी हेल्प को कॉल करने में पहला डिले, फर्स्ट डिले इज डिले इन कॉलिंग, सेकेंड डिले इज डिले इन रीचिंग, and third delay is at hospital which is called door to needle. We are at the door but needle के लिए अगर टाइम लगता है तो ये तीनों delays are causing difficulty in saving life.
सो पहला डिले में अगर हमारे पैरामेडिक्स जाते हैं और पेशेंट वहीं स्थल पर ही एट सीन ही अगर एक्सपायर्ड है, तो हमारे हमारे जो पैरामेडिक्स है वो वाइटल्स नॉट रिकॉर्डेबल ऐसा रिमार्क्स करके दे जस्ट लीव द प्लेस, बिकॉज वी डोंट ट्रांसफर डेड बॉडीज एंड दे कैन कॉल ए फिजिशियन एंड दे कैन टेक ए डेथ सर्टिफिकेट. When the patient is live and very critical, and if the patient dies en route, and we also maintain that record very scientifically and precisely. तो अगर en route death होता है तो भी receiving hospital उसको death declare करता है, and we try to give the best care. CPR है या ऑक्सीजन थेरेपी है, all kind of available resources we deploy through our paramedics for saving life. But if the patient could not be saved, then the death certification is done by the health facility. उसमें कोई लीगल इम्पैक्ट आता है सर? देखिए, एक्चुअली गुजरात में EMS लॉ है, और लीगल इम्पैक्ट में अभी गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी किया है कि अगर कोई भी मेडिको लीगल केस है जहां क्राइम है, कोई क्राइम के दरमियान भी हमारे लोग पहले पहुंचते हैं, तो उनको भी विटनेस वगैरह में नहीं लेते हैं, क्योंकि वी आर ऑन ए मिशन ऑफ सेविंग लाइव्स एंड आवर पैरामेडिक्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड. बट in other countries paramedics have a lot of legal issues also. तो यहाँ फॉर्चुनेटली हमारा लॉ से ये प्रोटेक्शन है, और हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ EMS है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, is about doing no harm. If you cannot help or do any intervention, our paramedics should not harm the patient by knowingly or unknowingly some intervention. So we train them, we retrain them, and our ERC physicians are continuously guiding our paramedics to what exactly the care should be given or intervention to be made. Yeah, good sir. ये उनका दूसरा सवाल था, शायद वो शायद एक और बार अगर क्लैरिटी दे सके कि लुकिंग टू द क्रिटिकल सिचुएशन रिलेटिव डिसाइड करे वहां पे ले जाते हैं या आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो डिसाइड करता है? देखिए, जैसे ही हमारी एम्बुलेंस असाइन होती है तो लोकेशन हमें पता होता है, और नियरेस्ट कौन सी हॉस्पिटल है और क्या चीफ कंप्लेंट है, कॉलर ने जो भी कंप्लेंट किया है उसके हिसाब से, और उसमें हम पूछते भी है कि कैन द पेशेंट वॉक. So this simple question answered by the relative or the caller makes us clear about the criticality. And after reaching the scene, our paramedics can change the hospital in consultation with our physician. May it be the reason why the relatives are insisting, or the actual situation or criticality is severe than assessed by our preliminary communication, and we change the hospital and we take the patients to the choice of the relatives, or the provided the facility should have appropriate abilities to cater the required care. यस सर, थैंक यू सर. हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश दोशी जी हैं जो सारवा चकला में एक नर्सिंग होम चलाते हैं. उनके कुछ सवालात हैं आपके लिए. तो डॉक्टर दोशी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Hello. First of all, I really appreciate the 108 services. During last 5 to 7 years, nearly more than 50-60 times I have used it. And it is always beneficial. Definitely during the corona and lockdown, the second phase, there were some problem due to overload work. Thank you so much. Yeah. So in some cases, in special cases, can you refuse to shift the patient? In any case where you homicidal, murder, or any alcoholic patient? No, we never refuse to shift a patient unless in alcoholic and beggars. So these are the two issues that we face, and a dead body. So we don't shift dead body in general. But if the scene is not safe and if there is a mob and they are insisting, then our paramedics will immediately pick up the dead body also and take them to the nearest hospital for declaration. Okay. And drugs, they are generally, we get a lot of calls. The picture is
प्रकाश जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी बोलिए। हेलो डॉक्टर दोशी। या आई एम हियर। या अभी पूछिए अगला सवाल। Okay, in special, hello, Yes, sorry, on the, yeah, in some cases you bring to the patient and the assign a hospital refuses to take the patients. So though the facilities are there, but non-availability of staff or the case is not up to the caliber of their hospital. So can you insist or simply you go for the another hospital? Actually, in Gujarat, we have EMS law. So every hospital is obliged or they must take the patient. But if the doctor is not there or staff is not there, and when the patient is going to suffer, in the interest of patient, we will take the patient to the next facility. जी सर। Dr. Doshi, unmute yourself. And anybody have question, please raise your hand so we can take your questions. I think 108 के बारे में बहुत सारे सवाल होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हम यूज करते हैं, आधी रात को भी यूज करते हैं, 24/7 यूज करते हैं, तो और नहीं यूज किया है तो भी हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम इसको कैसे अच्छे से यूज कर सके। बहुत सारी बातें हैं। Dr. Doshi, you have any more questions? I think he is not hearing me. So anybody has question? Please raise your hand. मुझे लगता है काफी सारी बातें तो खैर आ चुकी है, पर फिर भी Dr. Doshi, yes, go ahead. I think yes, some of my question already sir has covered it already. Okay, okay, thank you. Pankti Jogji, unmute yourself, ma'am. Thanks, sir, for that very informative lecture and session. मैं just ये पूछना चाहती थी कि जैसे अभी सभी हॉस्पिटल्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस लागू होते हैं, तो उनको डिस्पाइट वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या पब्लिक, हर एक डॉक्टर को भी वो पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड है वो रखने पड़ते हैं। अगर पेशेंट्स मांगते हैं या पेशेंट्स के रिलेटिव्स इन केस ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन मांगते हैं, तो 3 साल तक उनको वो रिकॉर्ड देना ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। क्या हमें भी इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स जो एकदम क्रिटिकल कोई सिचुएशन के लिए पेशेंट्स के रिलेटिव्स को चाहिए होंगे कि कब उनको लिया गया, कब उनको लेके गए, तो क्या हम देते हैं या हम देने के लिए बाध्य हैं? Yes, पंक्ति जी, it is very interesting question. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हैं तो उसका एक वॉइस लॉग रहता है। तो आज से मतलब गुजरात में जब से ये शुरू हुआ तो आज दिन तक के हमारे सारे कॉल्स और जितना भी कम्युनिकेशन है हमारे पास प्रिजर्व्ड है। दूसरा, हमारा जो पेशेंट का केयर रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक केयर रिकॉर्ड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, और हमारे हर एक केस का कोई भी डेटा जब भी चाहिए तो हम कभी भी आरटीआई में जैसे जनरली 20 रुपया इंसिस्ट करते हैं फीस और 30 दिन का टाइम मांगते हैं, हमारे वहाँ अक्रॉस द टेबल हम लोग विदाउट फीस भी ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो जो भी पेशेंट को कब कॉल आया, कब हमारी एम्बुलेंस पहुंची, पेशेंट की क्या सिचुएशन थी, क्या केयर प्रोवाइड की, कौन से हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया, वो सारी डिटेल्स हमारे वहां से अवेलेबल रहती है सबके लिए। Thank you, sir. So I'm hoping you got your answer, Pankti ji. Yes, yes, yes. Thanks. Okay.
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। सर, कुछ और बेसिक सवाल आते हैं, जैसे इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बात की ट्रेनिंग कोई जनरल पब्लिक के लिए आपके यहाँ दी जाती है क्या? जी, मैंने जैसे बताया, हमारा ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, जहां हम लोग हमारे खुद के ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही मोटिवेट रख के उनको ट्रेन रखना बहुत आवश्यक समझते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारे सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स है, वो लोग काफी मेहनत करके हमारे पैरामेडिक्स को मोटिवेट रखते हैं, उनको लीड करते हैं। और ईएमएस कितना भी अच्छा हो, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस को बुलाना वो पहला रिस्पॉन्स है, फिर एम्बुलेंस का पहुंचना दूसरा रिस्पॉन्स है, तो वो बुलाने वाला कम्युनिटी का एक मेंबर है। तो कम्युनिटी रिस्पॉन्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट फॉर सेविंग लाइव्स। तो उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये है कि एवरी फैमिली मस्ट बी हैविंग वन फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो पहला रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा एफआर प्रोग्राम बोलते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रोग्राम इज 1 डे प्रोग्राम। एनी लेमैन, बाकी के प्रोग्राम में हमारे पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए है, पर इसमें कोई भी सिटीजन, कोई वॉचमैन है, ऑटो ड्राइवर है, पुलिसमैन है, या जो भी इंसिडेंट को विटनेस करते हैं सबसे पहले, उन लोगों के लिए 1 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हम 8 घंटे में प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर डूज एंड डोंट्स और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो लोग लाइफ को सेव करने में। तो ये प्रोग्राम हमारे कॉमन सिटीजन्स के लिए हमारे पास रहता है। बहुत बढ़िया, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मूव है आपका। सर, 108 में जैसे मैं आपके हेडक्वार्टर पे आई थी, तब मैंने देखा था कि कुछ अलग प्रकार के स्ट्रेचर्स भी होते हैं आपके एम्बुलेंस में, तो वो कितने प्रकार के होते हैं और वो क्यों जरूरी होता है? देखिए, एक तो जब भी सीन पे पहुंचते हैं तो हो सकता है कि 1-2 आदमी को इंजरी है, कोई मल्टी कैजुअलिटी इंसिडेंट, एमसीआईज बोलते हैं, जहां 30-40 लोगों को इंजरी है। तो और टेरेन कौन सा है, ये रोड पे है, कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में है, कोई लिफ्ट में जा सकते हैं, कोई हिली एरिया में, खेत में जाना है। तो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग इंजरीज, जैसे पेशेंट को इमोबिलाइज करके स्पाइन का इंजरी है, तो स्पाइन बोर्ड का हमारा स्पाइन स्ट्रेचर रहता है। दूसरा, पेशेंट को अगर पेल्विस का इंजरी है, उसको लॉग रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको सीधा ही उठाने के लिए हमारे पास स्कूप स्ट्रेचर रहता है, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और उसको इकट्ठा करके, जैसे हम आइसक्रीम स्कूप कर लेते हैं, ऐसे ही पेशेंट को स्कूप करके हम लोग पेशेंट ऑटो लोडर स्ट्रेचर में जाते हैं। और ऑटो लोडर एक स्ट्रेचर ऐसा है जो यूनिवर्सल स्ट्रेचर है, जो हमारे पैरामेडिक्स है, एक 40-50 केजी की हमारी ईएमटी 100 केजी के पेशेंट को इजीली लिफ्ट करके एम्बुलेंस के अंदर लोड करे, और एम्बुलेंस से बाद में हॉस्पिटल में भी आसानी से ट्रांसफर कर सके, ऐसे स्ट्रेचर है। तो हमारे पास 5 टाइप के स्ट्रेचर है। ऑटो लोडर स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड है, स्कूप स्ट्रेचर है, व्हीलचेयर स्ट्रेचर है, जो गलिया या पतली सीढ़ियां है जहां पे लिफ्ट पूरे लंबे स्ट्रेचर को एकोमोडेट नहीं कर सकती है, तो कुर्सी में, चेयर में, व्हील चेयर में पेशेंट को बिठाकर हम लोग स्ट्रैपिंग करके उसको उतार सकते हैं। और तीसरा है जोली स्ट्रेचर, जो क्लॉथ का स्ट्रेचर है, जो मेडिकल सिक लोग हैं, जिनको कोई इंजरी नहीं है, उनको आराम से उठा के कुछ 50-100 मीटर तक लेके जाना है, तो वो लेके जाना है, और बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर रहता है वो। तो दिस 5 टाइप ऑफ डिफरेंट स्ट्रेचर्स ओवर एंड अबोव हमारी हर एक एम्बुलेंस में बीपी, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, देन सक्शन मशीन, बहुत सारी नीडल डिस्ट्रॉयर, और सक्शन मशीन भी एसी और डीसी पावर के साथ चलता है। किसी के घर में एसी पावर से चलना है, पर खेत में या ब्रिज के कोई फॉल डाउन का केस है, तो वो डीसी पावर का बैटरी होता है, और बैटरी और पावर दोनों खत्म हो गए हैं, तो पांव से उसको फुट पंप करके भी सक्शन करके पेशेंट का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का फैसिलिटी होता है क्या? वेरी आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दिस, कि ऑक्सीजन हमारी हर एक एम्बुलेंस में रहता है, और ऑक्सीजन में भी खास ये व्यवस्था है कि 2 डी टाइप के बड़े जंबो सिलेंडर हमारे एम्बुलेंस के बॉटम में रखते हैं, जो एक यूज में है और एक स्पेयर में रखते हैं। और आपने देखा होगा कि कोरोना में भी
हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिसका SpO2 लेवल ड्रॉप हो जाता है, हॉस्पिटल में वेटिंग में एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के अंदर ही बेड बनाकर उनको ऑक्सीजन देकर बहुत सारे पेशेंट की जान बचा सके हम लोग। तो ऑक्सीजन थेरेपी हमारे एम्बुलेंस का अहम हिस्सा है। उसमें ह्यूमिडिफायर भी है और ऑक्सीजन का फ्लो कंट्रोल करने का कंट्रोलर भी रहता है और मास्क भी रहता है। बहुत बढ़िया। और सर आप हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन 108 प्रोसेस? देखिए, हमने जितनी भी बातें की उसमें टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। सेंस, रीच एंड केयर, तीनों फेज की अगर हम बात करें तो हमारे कठवाड़ा का जो कम्युनिकेशन सेंटर है वो पूरे स्टेट के लिए एक ही है, और जहां हमारी कैपेसिटी है 50,000 कॉल तक हम लोग वहां से ले सकते हैं। सारे कॉल्स का रिकॉर्डिंग होता है और कॉल जैसे ही जनरेट होता है हमारी कैड एप्लीकेशन का इंटरफेस एक पॉपअप विंडो के फॉर्म में खुल जाता है और वहां सारी डिटेल्स हमारे EROs नोट करते हैं, और वही स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे एम्बुलेंस के जो पैरामेडिक है उनके मोबाइल स्क्रीन में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन और डेटा एंट्री, और सीमलेसली जहां जहां जैसे कम्युनिकेशन होता है डेटा जनरेट होता है, और डेटा अलग अलग स्टेज पे डेटा एंट्री होकर कोई भी पेपर यूज नहीं होता है हमारे पूरे सर्विस में। तो पेशेंट के जो वाइटल्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर लिया, बॉडी का टेम्परेचर लिया, हाइट, वेट, और या कोई और पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, वो सारी मोबाइल में पंच करके वो लोग सीधा हमारे सर्वर से ट्रांसफर करते हैं। साथ ही में ये प्री हॉस्पिटल केयर में जो जो ट्रीटमेंट और वाइटल्स है वो रिसीविंग हॉस्पिटल को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल को भी आने वाले पेशेंट के इवन वो ट्रैक भी कर सकते हैं हमारी एम्बुलेंस को, कि ये एम्बुलेंस 15 मिनट, अभी 14, 13, 12 ऐसे नजदीक आ रही है, और ETA के साथ में उनको पेशेंट की कंडीशन भी दिखती है कि ये मेल है, फीमेल है, इतनी एज का, चीफ कंप्लेंट में चेस्ट पेन है या स्नेक बाइट का केस है, तो दे कैन कीप देयर मशीनरी इन ऑर्डर टू ensure the continuum of care without wasting any moment of golden hour. तो ये सारा टेक्नोलॉजी का पूरा बहुत बढ़िया सर्विस रही ये तो बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है कि इट विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट दिस टेक्नोलॉजी। अभी आप अपने सिटीजन्स को कोई कुछ अपील करना चाहेंगे कि एज ए सिटीजन व्हाट वी शुड डू? बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए जहां कम्युनिटी और सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है। दे आर द रियल इनेबलर्स, अनलेस दे कॉल वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो एक तो यही है कि कॉल अवश्य करें, किसी को भी कोई भी आपत्ति में देखे तो 108 पे कॉल कर दे। दूसरा सबसे बड़ा योगदान सिटीजन्स ये कर सकते हैं कि जब भी एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेकर रास्ते से गुजरती है तो ट्रैफिक में उसको थोड़ी प्राधान्य और प्राथमिकता मिले, जिससे किसी की जान बचाने में वो भी सहभागी होंगे। और तीसरा मेन हमारा जो अपील है सबसे, ये वही है कि खुद को सेफ रखे, खुदा न खास्ता हमारी किसी को जरूरत ही ना पड़े, और खुद की सेफ्टी मतलब आइदर वी आर ड्राइविंग ए व्हीकल और वी आर मूविंग इन ए पब्लिक प्लेस और वी आर पासिंग थ्रू पैंडेमिक या कोई भी एपिडेमिक हो, तो उसमें खुद की डिसिप्लिन से, हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट, तो उसको मेंटेन करके रखे और खुद का जिम्मेदारी खुद उठाएंगे तो ओवरऑल हेल्थ डिजीज बर्डन भी कम होगा एंड हेल्दी नेशन की तरफ हम लोग सब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई, बिकॉज वी आर ए प्रोग्रेसिंग कंट्री और बहुत डायनेमिज्म रहती है लाइफ में, तो किसी भी पल कभी ऐसा लगे तो 108 इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया बातें की आपने। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके जो क्रू मेंबर्स है एम्बुलेंस के, उनका मेडिकल चेकअप डेली बेसिस पे होता है क्या? देखिए, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस, उनको फिर उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। मेडिकली तो दे आर वेरी यंग एंड फिट, बट मेंटली ऑल्सो वी डू सो मेनी एक्टिविटीज, एंड
वी आर ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज है उनको एंगेज रखना, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और कम्युनिटी एंगेजमेंट दोनों हमारा पैरेलल चलता है। लोगों को भी हम लोग हमारे साथ इन्वॉल्व रखते हैं और हमारे एम्प्लॉइज को भी उनकी बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको हम उभर के हमारे तक पहुंचे। कोई कच्छ के छोटे से गांव में अच्छा केस हैंडल करता है, या कोई वलसाड़ के बिल्कुल इंटीरियर हिली एरिया में कोई अच्छा काम करता है, तो हमारे तक ये पहुंचे उसका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म हमारे पास है। हमारे डॉक्टर्स और सीनियर पैरामेडिक्स उसको इवेल्युएट करते हैं, तो उनको हम बहुत वेरियस कैटेगरीज ऑफ अवार्ड से हम लोग रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि बेस्ट केयर का अवार्ड है, ऑनेस्टी अवार्ड, क्योंकि जब विपत्ति में आदमी के पास बहुत सारी वेल्थ और एसेट्स रहती है, सोने के गहने हैं, कैश है, क्रेडिट कार्ड्स है, हमारे लोग उसका भी हिफाजत करके सेफली फैमिली मेंबर्स को या पुलिस को हैंडओवर करते हैं। एंड दे डेमोन्स्ट्रेट बेस्ट ऑनेस्टी अलोंग विद द बोलते हैं कि पैशनेट केयर, तो इनको भी हम लोग रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन समटाइम्स दे क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ड्यूटी जस्ट टू सेव लाइफ, तो उनको भी हम बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी, ब्रेवरी, बहुत सारे अवार्ड से हम लोग उनको सम्मानित करते रहते हैं। इवन हमारे ड्राइवर्स को भी ये व्हीकल का यूज कितना अच्छे से करना है, क्योंकि व्हीकल हमारा टूल है, एम्बुलेंस इज ए टूल फॉर सेविंग लाइफ। फ्यूल एफिशिएंसी, रिपेयर मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, अपकीप, उसके लिए भी मोटिवेट रहे, उसके लिए हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडेक्स रहते हैं और उस हिसाब से उनको हम रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करते हैं। और जहां कोई चूक होती है तो हमारे पास एक साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड अपील प्रोसीजर भी है कि हर एक को हम लोग सही तरीके से इम्प्रूव करने का मौका दे, उनको जो भी पनिशमेंट दे, बट फाइनली वी शुड ब्रिंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी थ्रू अवर एंटायर टीम ऑफ सेवियर्स, पायलट, ईएमटी, और कॉल सेंटर के हमारे डॉक्टर्स और ऑफिसर्स है, फील्ड के सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, गवर्नमेंट के हमारे डॉक्टर्स और स्टेक होल्डर्स है। क्योंकि ज्यादातर हमारे पेशेंट 86% ऑफ द पेशेंट वी टेक देम टू नियरेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है और गवर्नमेंट हमें हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि बेस्ट गुजरात के लोगों के लिए 108 को हमेशा टेक्नोलॉजी से, ट्रेनिंग से और इनोवेशन से लहस रखे। बिल्कुल सही है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में बोला कि लोगों को भगवान से भी पहले 108 याद आने चाहिए संकट के टाइम पे, तो बिल्कुल आपने उनका भरोसा बरकरार रखा है। मैं समझती हूँ हम सभी सिटीजन्स की तरफ से मैं आपका, क्योंकि यू आर अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आपका, आपकी पूरी टीम का और जितने भी लोग 108 में जुड़े हैं उन सब का, सभी के बिहाफ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू और आप लोग सोसाइटी को और अच्छे से सर्विस प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएं। सर मैं समझ रही हूँ किसी और को क्वेश्चन है क्या? अदरवाइज वी आर कंप्लीटिंग द सेशन। So I think no one has raised their hand. So sir, with your consent, I would like to release my next session flyer. Please, thank you very much. Thank you for this opportunity. And Yes, we wish you all the best for your future episodes. And we look forward to get associated again and again. We have various programs. So we will keep on sharing our, and we will keep on growing together. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. And please have patience for just for 3-4 more minutes. So our next session is again on Ramayana का व्यवहारिक स्वरूप। बीके उषा दीदी जी will be with us, और वो राजयोगा मेडिटेशन टीचर है, मैनेजमेंट ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल काउंसलर है, ऑथर है एंड टीवी पर्सनालिटी है। बहुत अच्छी बातें, अगर पूरी रामायण नहीं पढ़ी हो तो ये सेशन एक आपके लिए बहुत हो जाएगा। रामायण में जो कही बातें हैं वो अपने व्यावहारिक स्वरूप में उसको कैसे लाया जाए और कैसे जिया जाए, उसकी सारी बातें नेक्स्ट सेशन में होने वाली है। तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू यू जशवंत जी, विकास जी एंड द एंटायर टीम ऑफ 108। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं नरेंद्र मोदी साहब का भी करना चाहूंगी
जिनके दिमाग में ये सब आइडियाज आते हैं और बहुत बोल्डली वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसको सक्सेस बनाने के लिए काफी सारी मेहनत करते हैं. सो थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे. मैं कई सारे नए चेहरे देख रही हूँ आज. ये उनके लिए खास बात करना चाहूंगी. ये हमारा एवरी सैटरडे ये सेशंस होता है ऐसे जूम पे 8:30 से 9:30 बिल्कुल फ्री में है. देयर इज नो चार्ज. यू हैव टू पे इट फॉर दैट. सो प्लीज ज्वाइन. और जिनको भी ज्वाइन होना है प्लीज राइट डाउन माय नंबर. माय नेम इज लीना दोशी and my number is 992503590. I'm repeating once again 992503590. आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगी. हालांकि आज 92nd एपिसोड अपना कंप्लीट हो रहा है और ये मैं जर्नी अपनी 108 पे मैं खत्म कर रही हूँ. और मेरा पासपोर्ट भी सर मैं आपको बता दूं कि मेरा पासपोर्ट शुरू से मैंने लीना 108 रखा है. इसलिए मेरा ये मानना था कि 108 सर्विस को तो अपने प्लेटफॉर्म पे लाना ही लाना है. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी. खुदा ना खास्ता किसी को इसकी जरूरत पड़े तो जरूर इसको यूज करें. इसलिए पूरा नेटवर्क, पूरा स्कीम, पूरा शेड्यूल आपको बता दिया कि आप अगर कॉल करते हैं तो एग्जैक्टली हाउ द 108 वर्क्स. So thank you so much everyone. Thank you sir once again. Thank you everyone and see you all on next Saturday. Bye bye. Take care. Be safe. Be healthy. Thank you so much. Thank you sir.